Hello, welcome to our special result day coverage on CNBC TV 18. I'm Parikshit, Luthra, and with me is my colleague Archana Solanki. 5 hours into counting of votes, trends show BJP is comfortably ahead in Rajasthan and headed for a sweep in Madhya Pradesh. The big surprise is Chhattisgarh. Though it is still a close contest there, the BJP has a built-up significant lead for itself. For the Congress, the lead in Telangana is the only silver lining for now, and it could end up losing the key Hindi heartland state of Rajasthan. Yes, good afternoon, Parikshit, and good afternoon to our viewers of CNBC TV 18 watching this broadcast. The trends are indicating a sweep for the BJP in 3 of the 4 states, with Telangana being the only exception or consolation for the Congress party. The party is also heading for its biggest ever win in Madhya Pradesh, the BJP. Even in Chhattisgarh, where exit polls were predicting a close fight, the Congress seems to be on the back foot, with the BJP emerging as the surprise likely winner. While the Congress is winning in Telangana, the BJP's vote share has risen to 14%. My colleague Santya Gora, who's been tracking these elections very closely and has been reporting from Ground Zero, is joining us on the broadcast. Santya, welcome to the broadcast. The numbers are surprising in Chhattisgarh, BJP leading in 3 states. Yes, absolutely. Actually, Chhattisgarh and Madhya Pradesh, these are the 2 states where the results, the numbers are the most shocking. Talking about Chhattisgarh, Chhattisgarh was a state Congress was more than sure of winning. And even Madhya Pradesh also. In fact, BJP's internal survey gave 130 seats to Congress. So it's very interesting to, analyze and talk about what went wrong for Congress in these 2 states and what worked for BJP. Talking about Chhattisgarh, the brand Bhupesh Baghel, the whole Hamar Chhattisgarh, the regional appeal, the OBC appeal, all these things didn't really work for Bhupesh Baghel. Now, and everything, Archana, changed in the last days of election campaigning, So, and that was the time when the whole Mahadev app was, it took center stage when it came to Chhattisgarh elections. There was ED, there was IT, there were allegations by the Prime Minister in all his rallies continuously, he kept talking about that. He in fact said ki Mahadev ke naam ko bhi nahi choda. So that shows us that to what extent BJP was focusing on the corruption part of Bhupesh Baghel government. Now there is another interesting thing which which could have worked for BJP was the fighting between Bhupesh Baghel and T.S. Singhdev. Remember in 2018 when Congress secured a massive victory at that time, a formula was agreed upon, 2.5 years CM sharing formula. Now, this CM sharing formula is always an interesting thing because obviously Chhattisgarh also did not see it actually materializing. Another example is Maharashtra, when in 2019 Shiv Sena and BJP came, at least Shiv Sena says that we had a similar setup, with a similar formula, but also there was no implementation of that as well. Talking about Madhya Pradesh, MP ke man mein Modi was the nara which was given. Today also when Shivraj Singh Chauhan started speaking to the media, he actually started with MP ke man mein Modi hai aur ye sabit ho gaya. But he was actually trying to play a little bit modest here, Archana, because it is actually Shivraj Singh Chauhan factor which did wonders for the BJP. Right. Of course, the leadership, Ashwini Yadav and Bhupendra Yadav also cannot be, we cannot forget about that. Rajasthan, BJP knew is going to win. So despite all the infighting, BJP was very confident of winning Rajasthan. Exit polls also to some extent, though they showed a tie, but still they were not as off mark as they were at least for Chhattisgarh. Telangana, BJP again is doing good in Telangana because remember in 2018 it's got only 1 seat, but now the number is far more than that. Very bad day for BRS and KTR for sure. Yeah, for BRS, I would like to say that a lot of people have said that KCR, for his national ambition, somehow put the local issues at the back burner. And you also mentioned a very important point about corruption in Chhattisgarh, where there were direct allegations, and the BJP consistently made direct allegations against the Chief Minister as far as the Mahadev scam is concerned, the alleged scam is concerned. Let's talk about corruption in Rajasthan. The opposition has raised the issue of the red diary. How significant do you think the role it played, the idea of red diary, the alleged corruption allegations against Mr. Gehlot? See, talking about, it's a very interesting thing, red diary.
See, these kind of things work very well in rallies and, you know, election manifestos also, and the speeches, because there's a very, it appeals to people. Then it was not just that, there were also paper leak scams. In fact, CNBC TV18, when we were traveling, when we were covering Rajasthan, at that time we highlighted, we spoke to the young people of the state, and we got a sense that how angry the young people were. Talking about paper leak incidents, though even BJP's tenure, there were paper leak incidents, but this time, of course, once again, ED, stepped in. There were raids at the Congress President Govind Singh Dotasra right before the election. So that also helped BJP. But paper leak scam was a major thing when it came to corruption. And not just that, Ashok Gehlot's son himself, Vaibhav Gehlot, was facing corruption charges. So BJP, of course, had an upper hand, saying that, oh, you know, we can bring you a clean government. But here we should also rely, the BJP was relying on the pattern of the state, the voting pattern also. Traditionally, Rajasthan never, repeats the party in power. It does not give it back. Yeah. Santhya, we will return to you, and Santhya has been getting us that analysis. One thing that the India Alliance will be also watching is the performance of parties like BRS and Congress in this election. Let's go across to Bhopal now. We're joined by ETV's Vasu Chaure. Vasu, thank you very much for joining us. मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस वक्त शिवराज सिंह चौहान कहाँ हैं और आपको क्या लगता है इस बार जो पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो क्या चाहता है? वो चाहता है शिवराज सिंह चौहान फिर चीफ मिनिस्टर बने, और लोग क्या कह रहे हैं, ये शिवराज सिंह चौहान की वजह से जीत हुई है, ये मोदी का मैजिक है, क्या वजह है? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी ने इस पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान मध्य प्रदेश में एक नारा दिया था, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। तो कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे बढ़कर ये पूरा इलेक्शन मध्य प्रदेश में बीजेपी ने फॉट किया, और इसमें कोई दौराय नहीं। जब मध्य प्रदेश में बीजेपी के सबसे लोकप्रिय नेताओं की बात होती है, चेहरों की बात होती है, तो उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम निकलकर सामने आता है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीजेपी के जितने भी मध्य प्रदेश में बड़े नेता हैं, और खासतौर पर जो मध्य प्रदेश से केंद्र में मंत्री हैं, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, फग्गन सिंह कुलस्ते हो, प्रहलाद सिंह पटेल हो, इन तमाम नेताओं ने जो है मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा। इसके अलावा सांसदों को भी मैदान में उतारा गया। जो होशंगाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी से सांसद हैं, राव उदय प्रताप सिंह, रीति पाठक, गणेश सिंह जैसे जो नाम है, वो मध्य प्रदेश में चुनाव लड़े। तो मल्टीपल फेसेस पे चुनाव हुआ। कैलाश विजयवर्गीय जो इंदौर 1 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, और वहां से बड़ी एक लीड के साथ वो जो है वो आगे भी चल रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी से। तो इन तमाम चेहरों के दम पर कांग्रेस ने, माफ कीजिएगा, बीजेपी ने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा है। और बीजेपी के जो पोस्टर्स मध्य प्रदेश में नजर आया, उसमें एक सिंगल फेस कोई भी नहीं रहा। ये 8-10 नेताओं का जिनका मैंने जिक्र किया, इन सभी के पोस्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी ने इनको फेस बनाया और इनके चेहरों पर चुनाव लड़ा। और इसके पीछे बीजेपी की स्ट्रैटेजी यही थी कि जो बड़ा नेता जिस एरिया से आता है, फॉर एग्जांपल जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, कृषि मंत्री हैं केंद्रीय, नरेंद्र सिंह तोमर, वो ग्वालियर चंबल से चुनाव लड़े। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के महासचिव हैं, बंगाल में बड़ी जिम्मेदारी वो निभा चुके हैं, वो मालवा जो कि इंदौर का इलाका है, वहां से वो चुनाव लड़े। महाकौशल जो कमलनाथ का गढ़ है, वहां से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को वहां पे मैदान में उतारा गया। और ये तमाम जो नेता हैं, ये अपनी अपनी सीट पे इस समय पे लीड कर रहे हैं। तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी ये कहीं ना कहीं कामयाब हुई है मध्य प्रदेश में, कि जो दिग्गज नेता थे अलग अलग क्षेत्रों के, उनको चुनाव मैदान में उतारना और उनके जरिए आसपास की सीटों पर प्रभाव डालने का काम करना, और वो उसमें बीजेपी कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि जो अब तक के रुझान है, बीजेपी को एक बड़ी लीड, 160 सीटों से ज्यादा सीटों पर बीजेपी मध्य प्रदेश में आगे चलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर ये तमाम जो रुझान अब तक आए, जो आंकड़े अब तक आए, बहुत शॉकिंग है। क्योंकि कमलनाथ का ये दावा था, दिग्विजय सिंह का ये दावा था कि हमने नारी सम्मान योजना जो दी है, हमने जो गारंटियां दी हैं, जिसमें महिलाओं के खाते में 1500 रुपए, गैस सिलेंडर का दाम 500 रुपए करना, और जो यहाँ के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनका एक बड़ा मुद्दा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम को हम लोग लागू करने का काम करेंगे। तो ये मुद्दों पर कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये अब तक के रुझानों से स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस अपनी इन तमाम बातों को जनता के बीच पहुंचाने में कामयाब नहीं हुई। और एक योजना का जिसका ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में जिक्र हुआ, वो थी बीजेपी की लाडली बहना योजना। बीजेपी लगातार दावा कर रही थी कि लाडली बहना जो है वो बीजेपी के लिए एक्स फैक्टर साबित होंगी, गेम चेंजर साबित होंगी, और वो कहीं ना कहीं अब इन रिजल्ट्स में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी
जी वासु, आप हमें ये बता सकते हैं अभी आप इस वक्त कहाँ हैं और उस वक्त माहौल कैसा है, क्योंकि लगभग जो रुझान है वो ये बता रहे हैं कि 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अगर आपके आसपास किसी भी पार्टी का माहौल जो दिख रहा है, चाहे वो बीजेपी का शोर हो या कांग्रेस का सन्नाटा हो, कुछ बता सकते हैं क्या हो रहा है आसपास? एक्चुअली देखिए, मैं भोपाल का जो काउंटिंग स्टेशन है, मैं उसके बाहर इस समय मौजूद हूं। अंदर काउंटिंग जो है वो चल रही है और भोपाल के जो प्रत्याशी है वो अभी अंदर बैठे हुए हैं और अपने अपना जो टेबल है, काउंटिंग टेबल है, वहां पर नजरें बनाए हुए हैं और लगातार जो आंकड़े, जो फिगर्स है वो अपडेट हो रहा है। बिल्कुल ठीक है आपने। कांग्रेस दफ्तर का सूरत हाल मैं बताऊं आपको तो इस वक्त कांग्रेस दफ्तर में सन्नाटा छाया हुआ है। हालांकि दिग्विजय सिंह कमलनाथ वहां पे अभी भी मौजूद है, लेकिन बीजेपी ऑफिस में जश्न का जो माहौल है, जश्न की जो तस्वीर है वो वहां से समझ में सामने आने लगी है और लगातार बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो वहां पर पहुंच रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। नेता जो है एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, वहां उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं वीडी शर्मा, जो यहाँ के संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, अश्विनी वैष्णव जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं और जो मध्य प्रदेश के प्रभारी भी बीजेपी के लिए, उन्होंने इस पूरे इलेक्शन में एक बड़ा रोल प्ले किया, तो वो भी यहाँ पर मौजूद रहे बीजेपी के वॉर रूम में। राइट अर्चना, ग्राउंड रिपोर्ट फ्रॉम वासु चौरे इन भोपाल. Of course, lots going in favor of Shivraj Singh Chauhan, but we're getting voices right now from the ground, aren't we? Yes, so Shivraj Singh Chauhan has given a reaction and so has Mr. Sindhya. Let's listen in. सब बोल दीजिए, लाडली बहना ने जिताया आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का महिलाओं ने भी जिताया, विश्वास, बहनों का भी बहुत आशीर्वाद मिला। मैं केवल एक चीज कहना चाहता हूं पल्लवी जी, और मैंने सदैव कहा है, भाजपा की डबल इंजन की सरकार, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश में भाजपा का एक एक कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की जन कल्याण योजनाएं, जमीन से जुड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी, लोगों के दिल के साथ जुड़ी हुई, और आज आपके चैनल के द्वारा मध्य प्रदेश के एक एक जन जनार्दन को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश की जनता को तो प्रणाम की गहराइयों से मैं देना चाहता हूं कि उन्होंने विकास और प्रगति का पथ चुना है, उन्होंने सत्य का पथ चुना है, और सदैव मैंने आपको कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। कांग्रेस को कुछ तो कह दीजिए। कांग्रेस को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो लोग कद की बात करते थे उनको जवाब ग्वालियर चंबल संभाग ने दे दिया उनके कद का, और पूरे मध्य प्रदेश ने उनको जवाब दे दिया है उनके कद का। Last time I met you, I told you that Congress would want to take revenge from you, because I remember when I interviewed Congress leaders by Mr. Kamalnath, Digvijay Singh, they said what you had done was धोखेबाजी, and जनता जवाब देगी. Today anything to them? मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरे दिल में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है। जो मुझे गाली देते हैं, जो मेरे लिए अनेक अनप शनप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो मुझे कई शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो मैं अपने कभी जिंदगी में किसी के विरुद्ध नहीं करता, उन सभी को मध्य प्रदेश की जनता ने। Mr. Rahul Gandhi had called the Prime Minister Panoti. The Congress ran a hashtag Panoti. Anything you want to say to Rahul Gandhi at some point? मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि जनता ने सबको अपना कद का जवाब दे दिया है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी का कद, दूसरे तरफ पूरा I.N.D.I.A का कद। मुख्यमंत्री बनेंगे आप? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री जी को जाता है, गृह मंत्री जी नड्डा साहब को, शिवराज सिंह जी को, बीडी शर्मा जी को, और भाजपा का एक एक कार्यकर्ता को जाता है, जिसमें मैं अपने आप को शामिल करता हूं भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में। Right. Also, Archana and Sandhya, you know, Jyotiraditya Scindia, his camp and people close to him are treating this as his victory in a way, because the places where his loyalists were there or where he campaigned heavily, we're getting a sense from BJP sources that it's 15-1 on BJP versus Congress in these seats where Scindia had campaigned a lot. And in a way, they feel that Jyotiraditya Scindia has been able to give an answer to the Congress party as well, as he was trying to settle scores in that interview as well. Let's go across to all our guests right now. We've got Senior Journalist Sanjeev Srivastav. We have AIMIM National Spokesperson Waris Pathan, BJP National Spokesperson Charu Pragya, and Congress Spokesperson Sujata Paul. Waris Pathan, if I can begin with you, what do you think has gone wrong for the BRS this time? Do you think it was anti-incumbency, voter fatigue, agrarian distress? And what is the larger national picture that emerges from this election, according to you? Waris Pathan. Well, I think it's too early to say anything. We should wait till around 4 p.m. Let's wait. But जो भी जीता है उसको बहुत बहुत मुबारकबादी, and those who have lost,
So I would like just to tell them that Zindagi ki yahi reet hai, haar ke baat hi jeet hai. It's the people's mandate and you must all accept it wholeheartedly. We live in a democratic country. One loses, one wins. That is what goes on. But see, we contested elections only in 3 states out of the 5. We in Madhya Pradesh, we contested only on 3 seats. In Rajasthan, we contested on 8 seats. And in Telangana, our home crowd, we contested only on 9 seats. And out of the 9 seats, what feedback I am getting is that on the 6 seats, we are leading. The other 3 seats also, there's a tough competition going on and that's what we will wait for. But the mood of the nation, mood of Telangana people is clear. They have voted for the Congress, but let me tell you, BRS or the KCR party has tremendously done great work for development in Telangana. In the last 10 years, KCR worked really very hard, but somehow or the other, he could not garner the support of the people, and the result is before the entire Telangana state. So we will accept the thing, but we'll work hard, we'll introspect what is to be done. But let me tell you, sir, wherever the BJP and the Congress are 2 sides of the same coin. I've been saying this since last 1 month. I was there present in Telangana and on many of the seats where our party candidates were contesting, the Congress and the BJP came together to ensure that our candidates don't win. In Goshamel, the Congress gave a dummy candidate so that Raja Singh could win. Even in Nampally constituency, the BJP never came there for campaigning also, so ensured that our candidates, they lose. On the day of the polling, there were some ruckus going on there, some people came there to see that nobody goes there for polling vote. So these all things are there, but we will introspect. I don't blame anybody now. It's not a time to blame game, but we will have to introspect and see what went wrong, what went right. But as far as my party is concerned, the AIMIM, we have done tremendously well, and now we will wait for the result at 4 p.m. Let's see the final outcome of what is happening. Because I think my 6 seats we are leading, sir, amongst the 9. And 3 each, there is a tough fight going on between me and the Congress party. But I am sure that we will come out. Introspect is required. That's what Mr. Pathan said. I want to go across to Mr. Sanjeev Srivastav. So what I want to know is, as far as these elections are concerned, especially Rajasthan and Madhya Pradesh, now BJP, looks like BJP is doing wonderfully, especially in MP, and performance in Rajasthan is also good. But talking about who is going to be the CM, is BJP going to face the problem of the surplus? Too many candidates, very senior leaders from the local leadership as well as national leadership? So I think it's a great question because at least in terms of Rajasthan, I have always maintained that the only riddle in this election is that when the BJP wins, who will be the chief minister? Because Vasundhara has not been promoted wholeheartedly. She has not also been kept on the sidelines wholeheartedly. So I think these numbers puts an old war horse and a veteran like Vasundhara somewhere on the front line in Rajasthan, because the margin of victory is not very huge. 107 is not a big number. If it was 115 plus, I would have said anybody of Mr. Modi's choice. But now it can be either Vasundhara Raje or another old veteran who has acquitted himself very well elsewhere. Chhattisgarh in charge, Om Mathur, who has 40 years experience, understands Rajasthan very well, knows the workers, each constituency very well. So I would think Vasundhara Om Mathur would be somewhere the front runners. High Command's choice could be Gajendra. So let's see. But these numbers suggest that BJP, the central leadership, may end up going in for a compromise. They may not insist on their own candidate. MP has been a huge surprise, but MP was looking like going the BJP's way towards the last fortnight. But this kind of a margin, this kind of an up move completely stumps you. And Chhattisgarh, you haven't mentioned. Chhattisgarh has come out of the blue. It's a bolt from the blue. So at least in the Hindi heartland, central India, BJP has reinforced its imprint, and it augurs very well for the party vis-a-vis the next year's national elections. Right. Thank you, Mr. Srivastav, for weighing in on why these 2 states are crucial and the trends that they show. BJP is leading in the 3 states, while Congress is likely to back Telangana. We'll have to wait and watch. On that note, what we'll do is we'll quickly slip into a short break. Please don't go away. We'll be back with the numbers and the big verdict 2023.
All right, welcome back. You're watching Election Exchange. We're seeing the BJP lead in 3 states, the Congress winning in Telangana for now. There is definitely an upset for the Congress in the state of Chhattisgarh. But let's go across now to Bhagpat Karad, Minister of State for Finance. He's joining us on the phone. Mr. Karad, thank you very much for joining us. The big picture that is emerging, according to you, क्या लगता है आपको जो बीजेपी की जो जीत हम देख रहे हैं 3 स्टेट्स में, स्पेशली छत्तीसगढ़ में, क्या रीजन है आपकी वजह से? अभी जो मैं चुनाव के ट्रेंड्स देख रहा हूं तो 3 स्टेट में बीजेपी अच्छी तरह से लीड कर रही है और तेलंगाना में बीजेपी का तीसरे नंबर पे है, लेकिन 3 स्टेट जिसमें हमारी सरकार नहीं थी उसमें अच्छे उलझान आ रहे हैं। तो इसी का एक ही है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के माध्यम से अलग अलग जो स्कीम्स जनता के लिए दिया है तो उसी के माध्यम से हमने काम किया है और जनता का एक विश्वास, कॉन्फिडेंस जनता को प्रधानमंत्री जी के बारे में है, इसीलिए अच्छे उलझान आ रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है 3 ही जगह मेजोरिटी आके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और इसी का अगर कोई एक ही व्यक्ति को, सब तो काम कर रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 साल में जो काम किया है उसी का नतीजा है। भगवत कराज जी, हमने ये देखा था कि काफी स्कीम्स अनाउंस हुई ट्राइबल्स के लिए इन द रन अप टू दिस इलेक्शन। गरीब कल्याण अन्न योजना को भी एक्सटेंड किया गया, काफी अनाउंसमेंट्स हुई विमेन वोटर्स के लिए भी। आपको लगता है ये जो ग्रुप्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्शंस के लिए? आर वी गोइंग टू सी मोर सच वेलफेयर स्कीम्स इन द रन अप टू द जनरल इलेक्शन? नहीं, इसी में क्या है कि जनरल इलेक्शंस में तो इलेक्शन का तो 1-2 महीने का रहता है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जैसे प्रधानमंत्री बने उसी टाइम्स को मैं बताना चाहता हूँ कुछ स्कीम्स ऐसे हैं तो ये देश का लास्ट सिटीजन इन द पुअर लाइन मीन्स अंत्योदय जो स्कीम बोलते हैं, गरीब से गरीब आदमी को मदद कैसा करना, जिसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना है, इसके माध्यम से 50 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का अकाउंट बैंक में खोला है जो पहले नहीं था, जो जीरो बैलेंस अकाउंट बोलते हैं। उसके बाद जो रास्ते पे काम करने वाला मजदूर है, स्ट्रीट वेंडर, तो ये स्ट्रीट वेंडर को भी 80,000 रुपए का मदद मिलता है जिसको कोलैटरल कुछ लगता नहीं है। आपने खुद बता दिया गरीब कल्याण योजना है। तो हर क्षेत्र में जो समझो उद्योजक है लेकिन उसके पास कोलैटरल देने के लिए कुछ नहीं है, कुछ उद्योग करना है, कुछ बिजनेस करना है, तो मुद्रा लोन जैसी योजना है। उतना ही नहीं तो लेडीज के लिए भी अलग अलग स्कीम्स है। आपने ऐसा मेंशन किया ट्राइबल एरिया में भी अलग अलग स्कीम्स है, पर्टिकुलरली ट्राइबल एरिया के बच्चों के लिए एकलव्य स्कूल जैसी योजना है। तो हर सेक्शन का, सोसाइटी का सेक्शन को मदद कैसा मिली, इसी के बारे में प्रधानमंत्री जी ने जो स्कीम्स, सैकड़ों स्कीम्स है और सैकड़ों स्कीम के माध्यम से सबको साथ मिल रहा है, सबका विकास हो रहा है और सबका विश्वास भी पा रहे हैं। और इतना ही नहीं तो सबका प्रयास भी है। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि स्कीम दिए, स्कीम लेने के बाद लोगों को विश्वास हुआ है। तो एक भारत एक विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है। मैं एमओएस फाइनेंस हूँ, मैं आपको बताना चाहूंगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स का अगर आप रिपोर्ट देखें तो 13.5 करोड़ जनता पॉवर्टी लाइन से ऊपर आई है। तो उनका रिपोर्ट है, हमारा रिपोर्ट नहीं है। तो ये अलग अलग स्कीम के माध्यम से हमारा देश का विकास हो रहा है। और एक नई बात जो बताना चाहता हूँ, माननीय 15 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ट्राइबल एरिया झारखंड में जाके एक विकसित भारत संकल्प यात्रा किया है। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा में रूरल एरिया और अर्बन एरिया में जो स्कीम्स है वो नीडी लोगों के पास कैसा जाना, उसके लिए भी यात्रा निकली है, जिसके माध्यम से लोगों को बेनिफिट हो जाएगा और जो लोग पिछड़े इकोनॉमिकली लोग हैं, भगवत कराज जी, उनका विकास हो जाएगा। एक सवाल आपसे और पूछ सके, मेरे कॉलीग्स हैं यहाँ, वो भी आपसे सवाल पूछना चाहेंगे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर अनफिनिश्ड एजेंडा हो, आप एमओएस फाइनेंस है, काफी स्टेप्स लिए गए हैं ईज ऑफ बिजनेस के लिए, जितने भी स्टेट्स की हम बात करें, चाहे गरीब हो, चाहे ट्राइबल हो या किसान हो, उनके लिए कुछ ना कुछ किया गया है। अगर आपसे मैं पूछूं एक अनफिनिश्ड एजेंडा जिसपे कुछ अगले महीनों में काम होगा, वो क्या होगा आपके हिसाब से? आवाज नहीं आ रही, आवाज
हाँ भगवत करात जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई अनफिनिश्ड एजेंडा आपके हिसाब से, जो काम आप वेलफेयर के लिए करना चाहेंगे, सरकार काम करेगी अगले कुछ महीनों पे? इसमें मैं एक ही बताना चाहता हूं, अलग अलग स्कीम का अगर इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरह से हो गया तो हमारा गरीब से गरीब आदमी का भी विकास हो सकता है, जो नीडी आदमी को मदद मिल सकता है। और अलग अलग स्कीम्स हम ज्यादा से ज्यादा पेनिट्रेशन कैसा हुए, और पेनिट्रेशन ही नहीं तो उसका सैचुरेशन कैसा हुए, और सैचुरेशन के बाद इन लोगों को में समृद्धि कैसा है। जैसे हेल्थ स्कीम में बताना चाहता हूँ, आजकल कोई भी बीमार आती है और उसको हॉस्पिटल जाना है तो पैसा लगता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत स्कीम है, बहुत ही महत्वाकांक्षा स्कीम है, जिसमें 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपीस का इंश्योरेंस है, और इसके माध्यम से हेल्थ सुधर सकती है। उतना ही तो जन औषधि स्कीम है, जिसमें जो मेडिसिन है, जो मेडिसिन 1/10 रुपीस को मिलती है, जो ब्रांडेड के बजाय जेनेरिक औषध लिया तो। ऐसे अलग अलग स्कीम्स मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन टाइम नहीं है, मुझे भी पता है। सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि अगर ये स्कीम का सैचुरेशन हो गया तो हमारा भारत एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो गया, सबको काम करना पड़ेगा और हम संकल्प जल्दी ही पूरा कर सकेंगे। और इसी का ही रिजल्ट है, जो उलझन आ रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहे हैं, तो लोगों को एक माननीय मोदी साहब के ऊपर विश्वास, काम करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, सभी सेक्टर के लिए अच्छा काम हो रहा है। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करात जी। नाउ आई वांट टू ब्रिंग इन मिस चारू प्रज्ञा. Charu, what I want to know from you is now at least MP and Rajasthan, of course, very good number for BJP, especially in Madhya Pradesh. But we are also talking about the problem of surplus here. The thing which I want to talk about is Rajasthan and MP, BJP High Command, brought in union ministers, MPs, and in fact, Kailash Vijayvargiya also, the General Secretary. Now, when the results are out and even local leadership has delivered, especially in Madhya Pradesh, how are you guys going to accommodate all these people? Because recent example, I want to talk about, Miss Pratima Bhaumik from Tripura, who is an MP, fought elections, won and resigned from MLA and went back to the, being the MP. So BJP brought her in, took her back. It was as required basis. Talking about MP and Rajasthan, what exactly is going to happen? Because there are too many people. How is BJP going to accommodate? Will we see the MPs and union ministers returning back to the centre or staying back? So ours is a cadre-based party. Let me first begin by thanking everyone and congratulating everyone who's worked round the clock over the last not just a couple of months but a whole 5 years to ensure this thumping victory for BJP. The tallest leaders from our party have worked shoulder to shoulder with the youngest and the junior most karyakarta, and that is what ensures a good result on a day like this. You're right, there have been a lot of people who've been fielded from the centre. There will be some responsibilities which will have to be looked at again. But we are a very disciplined party, and it's always all hands on deck for every single election. Whatever happens afterwards is going to be a decision of both the party and the concerned winning MLA. And when we know more about that, I would be very, very glad to discuss it with you. See, we have to remember that accommodating everyone in the conventional sense is not always necessary. In the centre, we have 303 MPs today. It does not mean that everybody has to be accommodated in a sense that the media or maybe somebody who's analysing this will talk about. We have delivered on many fronts. The first of them being that every time we make a promise to the people of this country, we deliver on that promise. We go back for the polls with a report card in hand. And as for the state, where we did not have our government till now, we have been very carefully mapping out all the instances of misgovernance and bringing it to the people's attention. That's one very big reason, because in the state of Rajasthan, we saw that Congress overpromised at the time of polls 5 years ago and underdelivered. In fact, when they were talking about farmers, they were supposed to be letting go of all the loans on the farmers' heads, but that has not happened. We saw that
Law and order is a huge issue now for any election to be contested, and this revolving door, I think that's just giving too little credit to the Bharatiya Janata Party right now, because it was believed that even in the state of Uttar Pradesh, no government repeats itself. Uttarakhand, no government repeats itself. But BJP has done that. We have proved that. So this time around, I don't think it is just going to be about, it is obvious because it is a revolving door. I don't think so. It is going to be this party, this government, all the support for Prime Minister Modi ji, all the support for the policies of Bharatiya Janata Party, all the support for every single Karyakarta who's worked on ground to bring this grand vision our Prime Minister has for the country to fruition. Right. Thank you, Ms. Pragya, for offering a perspective on why the BJP is leading in these 3 states. And let's also ask this question to Congress's Sujata Paul, who's with us on the broadcast. Ms. Paul, 3 states, out of which 2 you were already ruling. Of course, there'll be a lot of post-mortem. There will be introspection. What do you want to attribute this performance to? As far as Rajasthan and Chhattisgarh are concerned, definitely there are 2 different reasons over there. We were in power in both. And Chhattisgarh, we will be, waiting for the results to be announced finally. And we will be, not only introspecting on why our issues couldn't reach the people, why we weren't able to connect with people on the ground, because the government had delivered and people were happy about, most of the things that we were doing. And the proof lies in the pudding, and and not just eating of the pudding, but the presentation of the pudding, if I might say so. Because if you look at Chhattisgarh, the promises that we had made were being delivered, and the paddy price is something that the central government had tried to stop us from purchasing paddy from farmers at that point of time, saying that FCI wouldn't buy it at any cost if we bought the paddy at a price higher than the MSP. But then by the time elections came in, they also began to promise higher prices for procurement of paddy. In Rajasthan, if you look at it, the schemes that we had brought for the people of Rajasthan was something that was being delivered, and people were happy about that also. Yet, if we don't make it, there has to be some other reason also, and we must look into those. We will be looking into those. These are elections. Last time we won them, and the BJP was not able to bring down the government of Chhattisgarh and Rajasthan. So we should be happy about that. But ultimately, it will be the people's will which will reign supreme. And we will have to introspect, and especially considering the fact that Lok Sabha elections are around the corner now. We will be working towards that after having studied where we went wrong, what was it that that didn't affect people. Was it the choice of the candidates? Because that is something that has been discussed also. So maybe we need to go back to the drawing board and try to figure out what is wrong. But we will still be waiting till 4 o'clock, till the picture is absolutely clear on the margins, on the vote share. Because last time, whatever the vote margin was, it has increased from that. And the vote margin has always been very low in Rajasthan especially. So we will be looking into it. In the Bastar area of Chhattisgarh, for example, we always made a very strong mark, but this time definitely something is wrong in that region as well. Now coming to Madhya Pradesh, of course, whoever wins is the person who has been able to connect with people. So if the schemes of the government have reached the people, and the fact that even though we raised the issues of the Anganwadis, the paper leak, that really didn't seem to make a mark. And we will again look into what went wrong. But definitely, we will also be watching what happens to the MPs who were brought in to contest the MLA elections. Are they going to be contesting the MP elections again? And if that happens, then, we'll take it from there and work upon that.
All right, Sujata, Paul, and also Charu, Pragya, we would request you to stay on with us for a little more time, at least till 2 p.m. Your presence is important for our viewers. We have been getting a lot of reactions. Thank you for waiting patiently with us. We apologize for any delays from our side. I'll request you to stay on for just a little more time. We're taking a short break. We'll be right back in a minute.